Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 7th of March. The first topic is India's first indigenous flight trainer, that is HANSA-NG. We'll discuss about the detail. Second, Ministry of Home Affairs moves for the hybrid security model. Third, suggestions to take junk food ad from the kids shows. This is what the government is coming with the regulation very soon. Second last, Russia sanctions may not dent army preparedness. And the last is an editorial from Indian Express, physical for digital, right? We'll understand the detail of this editorial. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And something important I wanted to share about the prelims test series. This is for 2022. Those of you who will be appearing, there are 60 high quality tests along with the IS gazetted monthly subscription, right? For more details, you can refer to the description down below from where you can directly purchase this course. Now, starting with the news analysis of the day, India's first indigenous fire trainer, that is HANSA-NG. This particular news is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from it. At the same time, this news can also be supplemented under GS Paper 3, where Science and Technology and Upgradation part is concerned. So recently what has happened that this is for the first of its kind indigenous aircraft carrier HANSA-NG that was developed by CSIR and National Aerospace Laboratory, which is also known as NAL, right? ये पूरी ट्रायल कंप्लीट की गई है रिसेंट में सी लेवल की ट्रायल थी that was done in Puducherry, right? And necessary condition before it could have evaluated by the Director General of Civil Aviation. Because India में जितनी भी mandatory provisions हैं with regards to aerospace regulations वो DGCA के अंदर ही होती है. Now the objective of the sea level trial were to evaluate the handling qualities, किस तरह से वहाँ पे handling qualities की जा रही हैं, उसको evaluation करना, climbing and cruise performance, structure performance, power plant and other system performance. So this is a kind of a level check, or you can say this is a quality check that minimally and essentially required to be evaluated before it can actually function, right? So CSR or NL की जो lab है, it says that the aircraft is designated to meet the flying clubs of India and trainer aircraft. Now, HANSA-NG के बारे में अगर मैं बताऊं, before that I just want to show you an image. This is an image of this particular craft, and this is how it's looked like. Looking into the detail part, that is HANSA-NG. This is a new generation. NG stand for new generation. Is the reportedly one of the most advanced flying trainer powered by the Rotax digital control engine. So this is something specifically important for prelims and many other competitive examination. कुछ important features की अगर बात करें इसके, it has composite light airframe, glass की cockpit है, bubble canopy with wide panoramic view and electrically operated flaps, right? So this is the image. Again, you can have a revisit to this image. Now, HANSA-NG is designated to meet India Flying Club and needs of the aircraft commercial pilot licensing due to low cost and fuel consumption pattern. So again, commercializations and even in the part of getting license, commercial pilot की license है, उसमें भी बहुत हद तक आप लोगों को आसानी मिलेगी, जहाँ पे एक designated low cost, low fuel consumption pattern पे भी अब ये चीज़ों को प्रमोट की जा सकती है. Other news, MHA moves for hybrid model, security model basically. This again is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from it, Design and Implementations. Recently, the Union Home Minister, Mr. Shah, he has pitched that a hybrid model is essentially required. जिस तरह से CISF काम करती है इंडिया में, उसी तर्ज पे हमें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इंडक्ट करने की जरूरत है. एंड वी नीड टू फ्रेम, दिस इज अ लॉन्ग टर्म विजन दैट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज कम अप विद, एंड दे वांटेड टू क्रिएट अ पैरेलल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज व्हिच इज एट सेम पार विद द CISF. तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज बनाने की बातें कही गई. सो द ट्रेनिंग विल आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द फोर्सेज ओनली. ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा है कि जो इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को बनाई जाएंगी उनकी जो ट्रेनिंग है
वो कहीं ना कहीं CISF के सुपरविजन्स में होने की जरूरत है. द ट्रेनिंग would be provided to the security agencies on the task efficiently guiding the various kind of industrial and manufacturing unit in India. Although India has set a target for $5 billion economy, right? 5 trillion dollar economy, $1 trillion economy बनाने की बात की है, उस जगह पे इस तरह के फोर्सेस का क्रिएट करना भी बहुत अहम पार्ट है. Now, how does CISF function? What is CISF? It come into existence in 1969 with the modest beginning, जहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. फर्दर it has enhanced its security purposes to nuclear installations, space establishment, airport, seaports, power plant, जो sensitive government buildings हैं, even heritage monuments जो हैं, वो CISF protect करती है. अगर बिल्डिंग्स की बात करूँ, जो भी नेशनल बिल्डिंग्स है, UPSC की बिल्डिंग्स हैं, ढोलपुर हाउस है दिल्ली में, और भी ऐसे बड़े इसरो के जो बिल्डिंग्स हैं, वो सारी प्रोटेक्शंस जो हैं CISF करती है. Now it works as a salient karmyogi to ensure country industrial development and secure private manufacturing productions with India's road to 2.5 trillion strong economy, which will further enhance to 5 trillion economy. Now, demand for private security is something which is rising. Search देखी गई है. So the work of private security agency is rising rapidly. This calls for the regulations and their function. There's the reason being the MHA, that is the Ministry of Home Affairs, ने बातें कही हैं कि parallel security forces भी हमें create करने की जरूरत है, which should function privately. Now, the government aimed to enhance the efficiency of the private security agencies as CISF alone cannot render the task with the industrial manufacturing and unit. तो सिर्फ एक ऐसे फोर्स जिसके डिप्लॉयमेंट, जिसकी वर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. वी हैव टू क्रिएट अ पैरेलल फोर्स एज वेल. Now, suggestions to take junk food out of the ads and the kids show, something very important at this point when the people, especially the child, is vulnerable to this kind of ads. So this particular is related to issues related to development and management of health. एक recent में मीटिंग हुई है by the Ministry of Women and Child Development. They have suggested कि जो एडवर्टीजमेंट आती है ड्यूरिंग द शो ऑफ चिल्ड्रन, राइट, खास करके ऐसे शोज या प्रोग्राम जो बच्चों के रिलेटेड है, एडोलेसेंस के लिए जो है, उन प्रोग्राम्स में किसी भी फास्ट फूड की एड्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा. दिस इज व्हाट द मिनिस्ट्री हैज कैटेगोरिकली सेड इन अ मीटिंग. सो द आइडिया वाज टू ब्राउट during the meeting where the draft guideline called for misleading advertisement were discussed, right? So the government wanted to control the misleading advertisement where it says कि आप ये खाएंगे, you will get boost up, you will get height increase, you will get brain boosters. So these sorts of misguiding advertisement would no more allowed in the television shows or in any other platforms. So the meeting was attended by the officials from the several ministries, which include the Home Affairs, Health, Ministry of Broadcasting, and the Consumer Affairs. Now, guideline में क्या क्या चीज़ें की बात की गई है with regard to the advertisement. So they have said that do not promote a carbonated beverages, and it shows that celebrity performance with the dangerous stunt. कोई भी ऐसी फेक बातें जो एक्चुअल में नहीं काम करती है, उस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करनी है, which can further lead to the penalizations once the rule is being formulated by the government. अभी तो डिस्कशन हुई है, बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इस पर कानून लेकर के भी आएगी. Now, this also suggested that advertisement should not endorse the health supplement like जो डेली रिक्वायरमेंट है omega-3 की या फिर ब्रेन डेवलपमेंट की ऐसी बातें कही जाती हैं इस तरह के एडवर्टीजमेंट में. दिस शुड बी रूल्ड आउट एंड शुड नॉट बी प्रमोटेड. Now, the ad should not promote the unhealthy junk food that can lead to obesity in the children. Like आप जितने भी खास करके बच्चों के प्रोग्राम्स में मैकेन्स हो गए, फ्राइड आइटम्स हैं, दिस प्रिजर्वेटिव आइटम्स, चिप्स and other stuffs, that should not be promoted. Now, the Consumer Affairs Ministry has expected to release the guideline that would be prepared under the Consumer Protection Act 2019. Now, इस एक्ट के थ्रू जो चीज़ें आएंगी, फर्स्ट ड्राफ्ट की अगर बात की जाए जो पहले ही गवर्नमेंट ने रिलीज की है by the Department of Consumer Affairs, this was in 2020 and it does not provide specific provision related to the junk food advertisements, right? कुछ हल्की फुल्की बातें कही गई थी, but एक clear mandate नहीं दिया गया था. In this draft, the government has intended to prohibit the behavior that ads could have a dangerous to child. Child के जो mental health हैं, उनके psychological impacts भी होती है. So mental and amongst other several steps has to be taken so that it could promote a good health and good mental state. Now, if you look into the spread of fast food in India, these are some of the prominent companies like Domino's, Yum Pizza, KFC, and McDonald's. इनके operations जो हैं
इंडिया में ऑपरेट करते हुए इनको 15 ईयर्स हो गए डोमिनल्स को. अगेन यम पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा KFC ये जो हैं 17 ईयर्स है. एंड मैकडोनल्ड्स इज ऑपरेटिंग फॉर पास्ट 15 ईयर्स इन कंट्री. नंबर ऑफ रेस्टोरेंट अगर आप देखें 515 है डोमिनल्स की, पिज़्ज़ास वगैरह की 373 सब्जेक्ट टू अगेन फ्लक्चुएशन, एंड मैकडोनल्ड्स 300 आउटलेट्स हैं, राइट. एंड पर की जो सोल्ड आउट है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस आर द स्टोर सोल्ड आउट. इफ यू टॉक अबाउट द इंडियाज ईटिंग पैटर्न, ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ रुपीस की मार्केट है पूरी, ये तीनों ब्रांड मिलके या फिर और भी जो ब्रांड्स हैं. 8,000 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ग्रोथ अप टू 20 to 25%. कुछ चैलेंजेस भी है लाइक स्केलेबिलिटी एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट. सो दिस इज हाउ the Indian food market in terms of junk foods are being promoted, especially in the tier 1 and tier 2 and tier 3 cities. Now, Consumer Protection Act की रूल्स है 2019 में, which defines the misleading advertisement. यहाँ पे ये कहा गया कि सेक्शन 10 में ये प्रोहिबिट करती है कि कोई भी ऐसी चीज जो मिस इंटरप्रेट होती है, गलत इंफॉर्मेशन देती है, दैट हैज टू बी रेगुलेटेड. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर फॉल प्रोमिसेस एडवर्टीजमेंट को बैन करने की जरूरत है. Now, the Act also gives penalty for misleading advertisement, which call for definitely an endorsement of the product with a service cannot be extended for more than 3 years, right? So there are some penal provisions which are there. तो गवर्नमेंट ने इसमें प्रोहिबिशन और पेनाल्टी के लिए 10 लाख रुपीस तक के बेसिकली प्रोविजन रखे हुए हैं. बट वी नीड मोर टू कंट्रोल दीज टाइप ऑफ एनॉर्मलिटीज विच इज एग्जिस्टिंग इन आवर टेलीविजन इंडस्ट्रीज. Now, Russia sanctions may not dent army preparedness. This particular news again important for General Studies paper 2 in mains. That is bilateral regional grouping and agreement involving India's and affecting India's interest. तो Chinese People Liberation Army जो है PLA, वो expected है कि वो अपनी annual summer exercise करेगी तिब्बत में. This is the official confirmation coming from the Chinese government. And even the government of India has taken the cognizance of this. They are aware that इस तरह की कुछ मीटिंग्स होनी है. तो इंडियन फोर्सेस ने कंफर्म किया है कि वो प्रिपेयर हैं, जो ये मीटिंग हो रही है उसकी वो एक तरह से उस पर वॉच किए हुए हैं, सर्वेलेंस है इंडिया की. एंड दे वुड ऑल्सो सी कि अब जो ग्लोबल अटेंशन अभी यूक्रेन की तरफ डाइवर्टेड है, इस टाइम का गलत फायदा चाइना ना ले, राइट. सो दिस इज व्हाट अ प्रिपरेशनरी मेजर्स हैज बीन गिवन बाय नोट टू बाय बेसिकली. अगर जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने ये क्लैरिफिकेशंस दी हैं गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कि वी आर प्रिपेयर, वी आर नॉट डाइवर्टेड, वी आर सिंगल फोकस्ड अपॉन आवर टेरिटरी एंड मोर सिक्योरिंग इट आउट. So as per the defense official, the army preparedness is unlikely to impact the sanctions that is ongoing on Russia as well, right? तो कुछ sanctions भी लगाए गए हैं यूएस की तरफ से, और बहुत सारी जो एस वर्ड डिफेंस सिस्टम है, साइल सिस्टम है, अभी कुछ ऐसे आइटम्स है जो इंडिया लेती है, उसको लेकर के भी कोई खासी प्रॉब्लम नहीं आएगी. India has also kept watch in the PLA to gear up the Tibet exercises. Emergency procurements की अगर बात करें, the armed forces has made significant emergency procurement for last 2 years, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो स्पेयर्स है, जो एम्यूनिशंस हैं, उनकी स्टॉक्स कर ली गई हैं. एंड सफिशिएंट क्वांटिटी इज एसेंशियली केप्ट विद द पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी. सो इट शुड नॉट बी एनी इमीडिएट अर्जेंसी विद स्पेयर एंड अदर रिक्वायरमेंट. अगर अभी भी रशिया कुछ चीज़ें नहीं भेजती है तो वी हैव अ सफिशिएंट स्टॉक फॉर एटलीस्ट 2 years. For army, the armed crops is almost Russian origin, जहाँ पे इन्वेंट्री AK-47 राइफल्स हैं, मच बियॉन्ड द इन्वेंट्री पार्ट, आर्टिलरी पार्ट, इवन जो नए एडवांस्ड AK-47 के सीरीज है 207, उसके बारे में भी बात की गई है, वो भी मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, राइट. इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर बात की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज असेसिंग द इम्पैक्ट पार्ट ऑन द वेस्टर्न सैंक्शंस रशियाज. यहाँ पे वेस्ट ने खास करके यूएस ने सैंक्शंस किया हुआ है रशिया के ऊपर. उसके इम्पैक्ट्स इंडिया में ज़रूर होंगे पर उतनी ज़्यादा नहीं होंगे. There also include the various payment options that has to be available in the backdrops of it. And almost 5.43 billion की जो S-400 के मिसाइल की डील हुई है, उसकी डिलीवरीज कुछ हुई हैं, कुछ रुकी हुई हैं. So it would further get evaluated once the process of this national जो वो चल रही escalation हुई है, वो अगर कम होती है कुछ टाइम के बाद, फिर इस प्रोसेस को भी स्टार्ट किया जाएगा. India Russia has worked for the payment through the rupee ruble arrangements, right? And there is no usual बेसिकली कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है चाइनीज साइड से जहाँ रशियंस अटैकर्स यूक्रेन को लेकर के फायदा भी उठा सकते हैं. एंड इवन वी आर मोर कंसर्न ऑन द पार्ट दैट वी आर सिक्योरिंग आवर बाउंड्री ऑन द पीलर रीजन्स, राइट. बेसिकली जो ईस्टर्न लद्दाख की बॉर्डर्स हैं उनमें इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी के फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से डिप्लॉयड. Physical or digital, this is an editorial, something that is relevant for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from it, Design and Implementations.
What we're going to discuss under this editorial, there will be four important subheads. The first is the background, followed by the growing discourse on the DPI, making tech works for everyone and the way forward, right? तो पूरे editorial की जो theme है वो digital public infrastructure के ऊपर है। और जो लेटेस्ट यूनियन बजट है उनके पोस्ट एनालिसिस में ये पता चला कि जो एम्फेसिस है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसके पेनिट्रेशंस पे दी गई है, बट वाकई में ये ऐसा है, ये कहना है एडिटर्स का। So one of the important aspect that has been highlighted in this editorial that government has not focuses upon the DPI that stand for digital public infrastructure. This is what the editor has to say. अगर गवर्नमेंट ने इतनी डिजिटल पेनिट्रेशंस की बात की है तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं की है, राइट? वी हैव अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारे DPI ऑलरेडी इंडिया में स्टैब्लिश किए गए हैं, लाइक आधार इज देयर, यूपीआई सेक्टर इज देयर। जो आधार है, यूपीआई सेक्टर एक सेक्टर स्पेसिफिक है जहाँ पे डिजिट है ई गवर्नेंस के लिए और दीक्षा है एडुकेशन के लिए, राइट? सो वी नीड टू मोर focus upon the robust part of developing such digital penetration, or you can say the digital public infrastructure. Now growing discourse on the DPI, अगर बात करें DPI की किस तरह से जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस बजट में एक अलग डिस्कोर्स पे काम कर सकती थी, कुछ की अनाउंसमेंट की जरूरत थी। लाइक इन हेल्थ वन मेजर प्लेटफॉर्म दैट वर रजिस्टर्ड वाज अ यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर एंड रोबोस्ट कंसेंट फ्रेमवर्क। इस बजट में इस पे फोकस की गई है या और भी चीज़ों को की जा सकती है इसी कंटेक्स्ट में। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, जिसको देश स्टैक भी कहते हैं, टू हेल्प सिटीजन अप स्किलिंग थ्रू देयर ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो इस बार के बजट में ये ग्रोइंग डिस्कोर्स रही थी इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस यूलिप की बात की गई है टू स्ट्रीमलाइन द फंक्शन ऑफ द गुड्स अक्रॉस द ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलर्स एंड ट्रैवलर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर आप देखिए, दिस इज अ open source mobile stack for facilitating seamless travel of the passengers, right? So these are some of the prominent areas and key announcement that has undertaken in terms of the digital public infrastructure, but the editor wants कि इसमें और stress देने की जरूरत है। Now making tech work for everyone, this is what the penetration call for। अगर किसी चीज की जो दायरा है अगर वो बढ़ाया जाए, उसकी रीचेबिलिटी को बढ़ाया जाए, तभी उसके फायदे होते हैं। There's need to employ a public open digital infrastructure or किसी open digital ecosystem approach जहाँ पे जो users हैं they should also be protected and even the data should be properly utilized, right? So there's also essentially need for a data protection bill. Even in the Puducherry judgment case, the Supreme Court has highlighted the fundamental right and the right to privacy as a core essence of an individual, right? और इवन रिसर्चर्स ने ये कहा है कि डिजिटल डिवाइड है इंडिया में। फॉर इंस्टेंसेस इंडियन वुमेन आर ओनली 15% were likely to have a mobile phone and 33% are likely to have a internet connections. Finally, India must also focusing on developing the anchoring institutions जहाँ पे robust governance की framework बनाया जाए so that it could help for the DPI as well and for the other stakeholders that is concerned. वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, जस्ट आधार जिस तरह से एंकर्ड की गई है UIDAI की तरफ से, राइट, उसी तरह से पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था आयुष्मान भारत के लिए, जिसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। तो ODA के लिए भी हमें एक अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो इसको प्रमोट कर सके, इसको संभाल सके। ओपन डिजिटल इकोसिस्टम के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देन ओनली वी कैन इंश्योर दैट दिस इज वर्किंग इन अ सस्टेनेबल वे, इन अ रोबस्ट वे। These institutions are critical for setting the standards, ensuring a level playing field, and safeguarding the consumer interest. At the end, this is something that has to be consumable and it has to be reachable in terms of its penetration and affordability to the citizen of our country. So this is how the way forward can move ahead. Moving in the MCQs, some important questions for the day. Before I proceed, जो Saturday के questions थे उसके answers मैं आपको बता दूँ। For first question, the correct option is C. For second question, the correct option is A. Today's MCQ for practice आपको बताना है कार्बन वॉच जो ऐप है उसको किस स्टेट ने या किस सिटी ने लॉन्च किया है। कर्नाटका, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। I think most of you must be aware of this answer. If not, take a revisit to your current affairs, right? Second is Defense Acquisition Council. It is a constitutional body and the Prime Minister of India is the chairman of this council, right? Those of you who are specifically appearing for the CAPF examination, उन लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे, राइट? Now, this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.